Let me check who has joined. Okay, so only you are there. Okay, so I'm going to start today. First, by clarifying what is holozoic nutrition. Okay, so I haven't taught you about the holozoic nutrition in this chapter, no? Yes, ma'am. Okay, so it's the new topic, holozoic nutrition. So holozoic nutrition is basically what? It is a kind of nutrition that is usually followed by humans or animals, or we can say the living beings which are locomotory. Okay, holozoic nutrition cannot be performed by plants because holozoic nutrition is what? It is a process in which organism takes what? Solid food. It is as it is. The solid food which is prepared, they take the solid food inside their body. Then after taking the food, that solid food, inside the body, whole mechanisms of breaking down of that food and taking out the nutrients of that food into the body and absorption of minerals and other various components of the food into the body is done in this type of nutrition. Basically what? Solid solid food is taken directly, like we are eating some kind of fruits, we are eating vegetables, we are eating meats. So we are just somewhat cooking them and then taking that solid food into our body. So we are not breaking down these food into smaller particles or into any mineral and then we are taking directly what? The solid food. So solid food is directly taken in this process, that is ingestion. Ingestion occurs directly. Directly. Okay, I'll write it. So ingestion occurs, which is what? Directly, and then this ingestion lets the body, to perform various processes, means to perform the function of digestion, to perform the function of absorption, to perform the function of various other components which help in absorption or which help in giving energy to a body. So जितना भी process या breakdown का जितना भी process होगा वो सारा चीज body perform करेगा. City we will write what? Body to perform breakdown of these solid components into minute particles for their absorption. Okay, so absorption in the sense of what? कि जितने minerals हैं, vitamins हैं, जितने food and feeding चीजें हैं, वो सारी चीजें absorb हो. At the same time what? Elimination of unwanted we can say particles or minerals. Okay, unwanted particles or mineral what? These are species which comes out from our body. So these whole process occurs in what? Holozoic kind of nutrition, where their organism is taking solid food directly into their body and the body then performs breaking down of these food components and absorption of vitamins, minerals and various other beneficial components into the body, and at the same time they try to eliminate the unwanted food particles or unwanted minerals from our body in form of what? Fishes. So this kind of nutrition is holozoic nutrition. Now you understood, Sana, what is holozoic nutrition? Yes, ma'am. Okay, so we will come to the topic, lichens. Today I'll try to complete as much as I can because only 3 or 4 topics are left, which are very small topics. So if I'll take another 5 or 10 minutes, bear with me today. So lichens are what? Simply they are symbiotic association. Now Sana, you tell me what is symbiotic association or symbiotic relation? Again, I think you forgot. See, since I have these bacteria live in mutually beneficial association with other organisms. Yes, very good. Because this symbiotic term will come again and again in every other chapter. Okay, so lichens are also what? Symbiotic association. They are what? Organisms forming symbiotic association with what? They are forming symbiotic association with what? Fungi and algae. This is a most simplest definition है lichens का. That organism forming symbiotic association between fungi and algae. So any algae and fungi, if they are living together for their benefit, then that form of living togetherness is what called lichens. Okay, so basic characteristic will be what? Okay, so basic characteristic will include that they are having two partners. Two partners means what? One of them is algal component, which is called as phycobion. Okay, the algal component is called as phycobion, and the second one is fungal component. Second partner will be fungal component, and this second partner will be called as mycobion. Now, next characteristic will be what?
as they are having two partners. One is algal component, which is called phycobiont. Other is fungal component, which is called as what? Mycobiont. So they are what? Variously habitat, means they are varied in their habitat. They are varied. Varied means what? Found nearly everywhere. Found at many places. Many places. Okay. Varied habitat. Third characteristic is what? As they are having two partners, so out of the two partners, the fungal component is greater. That is, they have what? Dominance. Dominance over where? Algal component. See, fungal component क्या है? इसमें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ही बता दे, जो ये फंगल और एल्गल कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से इनके लाइकेन जो बने हैं, इसमें फंगल का कंपोनेंट नियरली 95 to 99% होता है, एंड वेयर एज द एल्गल कंपोनेंट इट इज including only what 1 to 5% of the association. So therefore lichen component, fungal component is what? It is dominant in the lichen. Okay, so I will write the next is what? Fungal component have nearly 95 to 99% of association. Okay, whereas the algal component occupies only 1 to 5%, and this point is very important. It can ask in various exams that कितना component एक lichen के association में है. So algal component constitute about 95 to 99%, and fungal component constitute about 95 to 99%, and the algal component constitute about what? 1 to 5% only. Now the next characteristic can be like they are varied in their habitat. So they are having different color also according to the habitat where they are staying. Okay, so they are of various colors. Okay, like somewhat where you can find blue, some will be yellowish, green, somewhere brown, or you can say dark brown. Okay, so they are of various colors. Now they have reproduction. So they reproduce what? Vegetatively and sexually. So vegetatively with what process? Vegetatively it will occur by fragmentation, and sexually with what process? They will sexually reproduce. Okay, yeah, sexually reproduce through ascomycetes, because most of the members of ascomycetes are capable of forming this what? Algal association. Okay, so ascomycetes, or we can say very few basidiomycetes also. So through ascomycetes, okay, spelling is wrong. Ascomycetes and few members of basidiomycetes. Basidiomycetes means ascomycetes will form ascocarp or carp or ye basidiocarp. Okay, so then they will reproduce. So these are all the characteristics of lichen, where we can study them about what are their features. Means they are having two components or two partners. One is algal component, which is known as phycobiont. Other is fungal component, which is known as mycobiont. Fifth, they are varied in habitat, means they can be found at many places, and many places like what? On the bark of wood, like they are found in marine water also, they are found in fresh water also, they can be found on soil also, so they can be found on rocks also. So there are many places where the lichens can be found. That is why they are varied in their habitat. Then out of these two partners, fungal component is greater and the algal component is smaller. Okay, now fungal component greater है कितने terms में? 95 to 99% of जो body association है वो किसका है? फंगस का है, and only 1 to 5% of body association किसका है? algal component का. Next point, they are varied in their color, like blue भी हो सकता है, green भी हो सकता है, yellowish green भी हो सकता है, brown, dark brown और somewhat reddish color भी हो सकता है. Reproduction में they can reproduce vegetatively and sexually also. Oh, one of the most important point, they are, ये बहुत जगह पूछा भी गया है, even it has been asked once in NEET, indicators of pollution. Okay, and mainly SO2 pollution, So this is very important point. Okay, so wherever polluted area is there, the lichens will not grow because they need clean environment for their growth. So wherever polluted area is there and lichens are not growing, it means that what? Means you can say if lichens are not present in any particular area, means that area is what? Polluted area.
and mainly they indicate what? SO2 pollution. Wherever SO2 pollution is increases, the growth of lichens what? Decreases. So this is one of the another important point. And how they are forming the association, let us see that. See, this one I will write here. This one is what? Fungal component. Fungal component. And this one is what? Algal component. Now how they are benefiting each other, we will see that. Point wise we will see. Point number 1. This fungal component is giving what? It is providing nutrition to the algal to the fungal component. Means fungus is what? It is heterotrophic. The fungal heterotrophic है and it is incapable of forming its own food. अपना खाना खुद तो बना नहीं सकता, तो for food and feeding किस पे depend होगा? Algal component में. So algal component is for provide what? Nutrition. Provides nutrition to the fungal component, or we can directly write only nutrition. Okay. And second point, जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, एन एल्गल कंपोनेंट इज व्हाट? इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इट्स ओन फूड एंड इट इज हैविंग क्लोरोफिल्स एंड पिगमेंट्स. एंड ये क्या है? इसके पास कंप्लीटली सेल वॉल के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? complete cell wall and complete cellular structure. So ये भी they will also what? Provide what? Nitrogen fixation. Okay. And next, how fungal component is helping algal component? Fungal component is giving first of all shelter for living of the algal component, and second, it protects from what? UV radiations, protects from UV and other harmful radiations. So ये एक दोनों तरफ से ये पूरे जो ये है, this is forming what? Mutualism or what? Symbiosis. Mutualism, or we can say symbiosis. Both are the same term. Don't get confused. Mutualism or symbiosis means one is helping the other and other is also helping the prior one. Okay. So means अगर इन दोनों में से कोई एक दूसरे का मदद ना करे तो दोनों साथ में कभी नहीं रहेंगे. Means इसका ये है कि अगर हमारा मदद करोगे तो ही तुम्हारा मदद करेंगे. Otherwise you go out and live independently. This is the criteria of their association. Okay. So now coming to the slide. See, this is the structure of lichens. You can see beautifully. They are looking very beautiful, but some lichens are harmful also. So this is one zoom out structure of lichen. See, it is yellowish green in color, na? And it is what kind of lichen? Trichoccus. I think it is named like this. Let me see, Trichoccus or something like that. Okay, later it will come. So we will see the slide. Lichens are what? They are symbiotic association in between algae and fungi. And the algal component is autotrophic, means algal component ही food provide कर रहा है, and fungal component is heterotrophic. And different forms of lichens are formed on the basis of habitat. See, Saxicolous, Lignicolous, Quadricolous, yeah, Terricolous. Terricolous is this one, marine and freshwater. So what is Saxicolous? Saxicolous means what? They are capable of living on rocks. Okay. So let me write here only. ये क्या है? Rocks पे रहने वाले Saxicolous. Lignicolous what? Lignins में. Lignins of what? Trees में. Lignins of trees. जो ट्रीज के ऊपर स्टिकी मटेरियल हो जाता है ना, जो हार्ड हो जाता है, हार्ड स्टिकी मटेरियल, दैट इज कॉल्ड लिग्निन. एंड उस लिग्निन के ऊपर अगर ग्रो कर रहे हैं तो दे विल बी व्हाट? कॉल्ड एज लिग्निकोलस. देन कॉर्टिकोलस. Corticolous are what? Corticolous are that they are in soil. Okay, soil ones. And Terricolous are on the branch of trees. Okay. So Saxicolous are somewhat rock. Saxicolous means rocks पे develop करने वाले या rocks पे grow करने वाले lichens. Then Lignicolous means lignins of trees, जो hard racines and या sticky gum like structure racines पे होते हैं ना, उसके ऊपर grow करने वाले lichens को Lignicolous कहते हैं. Then Corticolous means ऐसे lichens जो directly soil के ऊपर grow करते हैं. And Terricolous means जो branch of trees के ऊपर grow करते हैं. And now marine and freshwater. Marine means जो marine area या marine water forms में पाए जाते हैं, and freshwater means those lichens which are found on freshwater areas. Okay. So now morphology. Morphology means they vary in color like orange, brown, dark brown, gray, yellowish, green. See here in the figure, somewhat orange, somewhat dark brown, and this microscopic view, and somewhat what? Greenish in color. So they are varied in their different colors. Based on the morphology, there can be crustose, leprose, foliose, fructose, filamentous. See, only basically 3 types are there. Okay. 3 main types हैं lichens के. 3 types जो हैं, that is one crustose, second is fructose and foliose. Okay. So ये 3 main हैं. बाकी ये जो 5 के फॉर्म में दिया है, that is not very important. Only these crustose, foliose and fructose are most important. And ये 3 main भी हैं. See the structure. Crustose lichens are what? They are stick
to their rock surfaces, and they are widely distributed on that rock surface. And foliose structure is like this. You know, थोड़े बहुत ही मतलब they are somewhat detached from their surface and not fully attached to the surface. And foliose like में fructicose lichens are what stem और branch like तुम्हें मिल सकती है, उसमें branching मिलती है, तो वो क्या हो गया, fructicose lichens हो गया. ठीक. Now these lichens are crust-like, closely attached to the substratum. Example में graphis and lecanora. Example you don't have to remember any. Leprose means like minute scale attached to superficially. See, leprose ones what they are very minute and not fully attached. They are just superficially attached to the ground part or substratum. Okay. Foliose ones what they are twisted and crinkled leaf-like. Okay, their structure will be like this. Foliose ones. And fructicose ones, these are branched erect like this one. They will be not fully attached to the substratum. They will be having branches in them. And filamentous what these lichen consist of chains of algal cells wrapped around the fungal hyphae. ये बहुत ही rare to rare मिलता है filamentous वाला. Okay. Internal structure is the major part of lichen body constitute of was fungal and only 5% is algal component. And ये कितना है? 95%. The body is divided as upper cortex algal zone, that is called gonodial layer, and middle medulla, lower cortex rhizines. So upper body को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, algal zone, middle medulla, lower cortex and then rhizines. इसका स्ट्रक्चर कभी नहीं पूछेगा, so this is not so much detailed point. Okay. Then only algal component is photosynthetic partner. This one is only photosynthetic partner, and about 98% lichens. The fungal partners belong to what? Ascomycetes. I have explained this one. Rest में fungal partner belong to Basidio या Deutero. तो ज्यादातर के लोग क्या करते हैं? Ascomycetes की एक ग्रुप वाले जो फंगस है वो lichens के फॉर्मेशन में मदद करते हैं. Symbiotic relation में सी algal partner क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, photosynthesis and vitamins and other growth changes. So photosynthesis से क्या मिलेगा? Nutrition. And second important nitrogen fixation कराते हैं. Fungal component outer covering protection के लिए, attachment to the substratum, protection against harmful radiation. So दोनों एक दूसरे का क्या क्या मदद करते हैं ये भी इसमें बता दिए गए हैं. On the basis of mentioned role, algal and fungal partners, they show symbiotic. See, ये symbiotic कैसे दिखाते हैं? अगर कभी question पूछा है, show how या give the reasons how they are symbiotically associated with each other. So you have to give these three reasons or 3 points that they are related to each other, and they are by these 3 reasons they are symbiotically associated with each other. Okay. Now sometimes microbiont in the Hostoria into algal part. See, ये interesting point है. Sometimes happens what? Fungal component show its dominance. Fungal dominancy show करता है. Dominancy show करने के बाद ये क्या करता है? It creates what? It creates dominancy over the algal part, and in that process, it is prevent what? Secretions. Prevents secretion of pectin and other components. Okay, see here. So it alga prevents what? Pectic substances, that is pectic substance means pectin को secretion जो algal component में होता है उसको बंद कर देता है by showing their dominancy, and also induce करता है क्या? other nutrient algal को induce करने के लिए बोलता है, means alga जितने अपने nutrients include करता है या बनाता है उस nutrient को stop कर देता है किसके? by showing dominancy over the algal part. एंड ये इन दिस केस क्या हो जाता है? फंगल क्या है? कंट्रोल पैरासाइट शो कराता है किस पे? एल्गल के ऊपर. इस फेनोमेना को टोटली क्या कहते हैं? हेलोटिज्म. So this part has never been asked in any of the exam. It is just one of the point that sometimes क्या होता है, as it is 90 to 99% of fungal part. So fungal part अपना dominancy कभी कभी शो करता है algal part में, और उसको उस dominancy के पीरियड में जितनी algal की secretion है nutrients जो वो secrete करता है वो stops हो जाती है. Stop होने के बाद क्या होता है? वो एक fully algal जो होता है fully depend हो जाती है उस पे fungus पे, एक parasite की तरह. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहते हैं. नाउ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली और सेक्सुअली दे विल रिप्रोड्यूस ईदर बाय फ्रैगमेंटेशन और बाय डेथ एंड डिके. नाउ सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? एस्कोमाइसिटिस बनाएंगे या बेसिडियोकार्प बनाएंगे. ठीक. इंपॉर्टेंस क्या क्या है? दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस? So we will see lichens contain what? Complex carbohydrate called licanin. It is used for what? Many animals. See, lichens are used as food in many areas of China. ठीक है. तो they are used as food eating material also. Many lichens are useful in what? Producing medicines like usnea and cladonia. ये तुम्हें याद रखना होगा usnea and cladonia because they are useful in making antibiotics. Okay. And lichens like Rochella, Tinctoria, Parmelia, they are making different type of dyes. So only you have to remember this name, Tinctoria. Okay. Tinctoria is useful in making of dyes. लिटमस जो अभी आजकल केमिस्ट्री में लिटमस पेपर बनता था वो प्रीवियसली किससे बनता था? वन ऑफ द टाइप ऑफ लाइकेन से ही बनता था. एक्सट्रैक्ट ऑफ लोबेरिया एंड अदर आर यूज्ड इन टैनिंग इंडस्ट्री. सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. लोबेरिया पल्मोनेरिया, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम. इट इज यूज्ड इन व्हाट? टैनिंग लेदर.
Some lichens like Usnea are used in weaving industry. Lichens are best indicators. See, it is the most important point. This one, they are used as what? Pollution indicators. They do not grow in polluted environment. They help in understanding the process of what? Biological succession by ecologists. So ecologist को जब biological succession पढ़ना होता है, means wherever there is growth of lichens, means the life in that area or that place will start. Means the life is going to start. A new succession is going to start. So that is why ecologists find these kind of places for their study. Okay. Now these two figures are from yesterday's class. This is what early blight of potato. कल मैंने एग्जांपल बताया था ना कि डिसीज कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एंड दिस इज व्हाट लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. सो ये कौन सा कॉज कराता था? लेट ब्लाइट ओमाइसिटिस, एंड दिस वन अर्ली ब्लाइट वाज कॉल्ड बाय व्हाट? ड्यूटेरोमाइसिटिस. आई जस्ट एडेड अ फिगर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट मोर इजीली. सो इन द लाइकेंस, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ दिस टॉपिक? लाइकेंस क्या है, कैसे लिव आउट करते हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस लाइकेन पार्ट? Halotism. What? Halotism topic. Process. Halotism. Where was it? Halotism. Okay, yes, halotism again. So ये कैसे फंगल कंपोनेंट अपना डोमिनेंसी शो करता है? So see, in some cases जब फंगल कंपोनेंट और लाइकेन कंपोनेंट, सॉरी algal कंपोनेंट, ये फंगल कंपोनेंट है. This one is fungal, this one is algal component. So fungal component in some cases क्या करता है? जो ये अपने तरफ से मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट को जो सीक्रेट करता है, स्पेशली पेक्टिक सब्सटेंसेस को. पेक्टिक सब्सटेंसेस जो भी रहते हैं, ये बेसिकली क्या है? एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं जितने भी हैं. तो ये जो रिलीज करता है बाय फोटोसिंथेसिस, ये क्या करता है? ये फोर्स स्टॉप करवा देता है, फोर्स्ड स्टॉप, और ये अपना डोमिनेंसी शो करता है. बाय दिस इट इज शोइंग व्हाट? डोमिनेंसी. तो ये डोमिनेंसी जब ये शो किया है, तो इस पूरे फोर्स स्टॉप प्रोसेस, मतलब कि जो ये फोर्स स्टॉप करा दिया एल्गल के ऊपर अपना डोमिनेंसी शो करके, इस पूरे प्रोसेस को बोल रहे हैं हेलोटिज्म. ओके, ये क्या है? कंट्रोल्ड फेनोमेना है. किसका? इस फंगल कंपोनेंट का ओवर दिस एल्गल कंपोनेंट. हियर इट इज शोइंग व्हाट? इट्स डोमिनेंसी, दैट या मेरा पार्ट ज्यादा है, हम ज्यादा पार्ट लिए हैं, तो ये क्या है? अपना डोमिनेंसी शो कर दिया. और इसी जब डोमिनेंसी शो करेगा और इसका पूरा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है? इसके साथ एक पैरासाइट की तरह रहने पर मजबूर हो जाता है. मीन्स इट विल जस्ट लिव एज व्हाट? पैरासाइट. पूरी चीज के लिए डिपेंड हो जाता है इसके ऊपर, फंगस के ऊपर. मीन्स कि अपना खाने पीने जो खुद से बना पा रहा था, खुद से जितने मिनरल्स सीक्रेट कर पा रहा था, उसके लिए भी फंगस कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड हो जाता है. सो ये काइंड ऑफ जो क्या बोलते हैं कंडीशन आती है, उस कंडीशन को बोलते हैं हेलोटिज्म. नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट दिस? Yes, ma'am. ओके, सो वी विल मूव टू माइकोराइजा क्विकली. माइकोराइजा में ज्यादा कुछ नहीं है, only few points are there for you to understand. Mycorrhiza is what? Association between what? Fungus and roots of higher plants. Okay, it is what? Symbiotic association again between what? A fungus and roots of higher plants. So ये roots of higher plant कोई भी plant हो सकता है. Okay, जरूरी नहीं है कि मतलब एक ही plant हो. There can be various of plants, either it is gymnosperm or it can be angiosperms. Okay, so कोई दिक्कत नहीं होगा इसे. It will just form an association. So roots of plant means be it any plant or trees. So ये उसके साथ अपना एसोसिएशन बनाएगा, एंड जिसके साथ या जिस प्लांट के भी साथ उसका एसोसिएशन बनेगा, those trees or plants which form association with mycorrhiza, they will not have their root cap. They don't have their root cap. रूट कैप मीन्स की जो रूट में जो टिप पार्ट होता है वो एब्सेंट हो जाएगा. क्यों एब्सेंट हो जाएगा? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? माइकोराइजा मॉइस्ट होते हैं, मीन्स फंगस आर व्हाट? मॉइस्ट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं. तो जो ये रूट कैप होता है प्लांट्स में या ट्रीज में, वो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल के लिए हेल्पफुल रहता है. मीन्स सॉइल से पानी को अब्जॉर्ब कराता है. ठीक है, तो ये जब जिसमें एब्सेंट रहते हैं उसमें प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होती पानी को अब्जॉर्ब करने में. क्यों? क्योंकि माइकोराइजा इज ऑलरेडी अ मॉइस्ट ऑर्गेनिज्म. ओके, इट प्रेफर्स टू ग्रो ऑन मॉइस्ट एरियाज. सो there are basically क्या? On the basis of location या based on location of fungus, two type of mycorrhiza are there. One is ectomycorrhiza, another one is endomycorrhiza. Here see the structure. It is what? On basis of location of fungus. On the basis of location of fungus, two type of mycorrhiza are there. One is endomycorrhiza, another one is ectomycorrhiza. अब इक्टो और इंडो में क्या डिफरेंस है? इक्टो में क्या है? इसकी जो हाइफी है ये सिर्फ एक्सटर्नली इन बिटवीन द सेल्स हैं. देखो ये सिर्फ यहाँ इस रास्ते के थ्रू जा रहे हैं, ये सेल के अंदर इंसर्ट नहीं हो रहे हैं. लेकिन इंडोमाइकोराइजा में देखो दे आर entering inside the cell structure and sometimes they can also move outside the cell structure. Means
इनका क्या है, ये आउटसाइड भी मिल जाएंगे और ये सेल के अंदर भी मिल जाएंगे। और इसमें क्या है, दे आर जस्ट मूविंग आउटसाइड द सेल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स एंड वो रूट के अंदर नहीं जा रहे हैं, रूट के सेल्स के अंदर नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो इंडोमाइकोराइजा है वो रूट के सेल के अंदर भी स्टे कर रहा है एंड एसोसिएशन बना रहा है, ठीक है। और ये किस लिए ऐसा कर रहे हैं, दे आर गिविंग नरिशमेंट। ये एसोसिएशन के बाद भी दे आर प्रोवाइडिंग व्हाट, नरिशमेंट, नरिशमेंट टू द रूट्स, ओके। तो ये इनके अंदर जाने की वजह से, मीन्स एसोसिएशन बनाने की वजह से भी प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि ये लोग क्या मिल रहा है, फायदा हो रहा है, नरिशमेंट हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई दे आर फॉर्मिंग व्हाट, एसोसिएशन। और इसी रिलेशन को अगेन वी हैव टोल्ड दैट सिम्बायोटिक एसोसिएशन। Now coming back to the slide again, fungus can form association with roots of many plants and roots of a plant can turn form association with fungi। वही चीज है, किसी भी रूट के प्लांट, मतलब किसी भी प्लांट या ट्री के रूट से एसोसिएशन बना देगा और वहाँ फंगाई को भी हेल्पफुल, यानी कि उसको क्या मिलेगा, शेल्टर मिलेगा। माइकोराइजा और फॉलोइंग टू टाइप, इंडोमाइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा। एक्टो वाले में क्या है, बल्क ऑफ फंगस ग्रोज ओवर द सरफेस ऑफ अ मैंटल। सी, ये सरफेस की तरफ ही ग्रो करेगा, मैंटल में अंदर, सेल के बाहर बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, उसकी जो हाइफी है। एंड इंडोमाइकोराइजा में क्या है, फंगस ग्रोज इनसाइड द कॉर्टेक्स ऑफ रूट विद सम इंटरसेलुलर हाइफी टिप्स। ये अंदर तक की जा रहा है, सेल के अंदर भी हाइफी टिप्स उसकी सेल के अंदर भी जा रहा है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं इंडोमाइकोराइजा। नाउ दिस काइंड ऑफ माइकोराइजा आर व्हाट, द फंगल हाइफी डेवलप्स ऑन, ओके, हियर दिस पॉइंट इज to be noted that in some form of endomycorrhiza, the fungal hyphae develops some special organs called what, vesicles with the roots of cortical cells. This kind of mycorrhiza are vesicular arbuscular mycorrhiza. So VAM is an important one. What is it saying? कि इसमें जो हाइफी रूट सेल्स को पेनिट्रेट कर रहा है, इसमें ये लोग कुछ जो इंडोमाइकोराइजे हैं वो लोग ये एसोसिएशन बनाने के साथ इस सेल के अंदर जो कॉर्टिकल सेल्स हैं, यानी कि इस सेल्स के अंदर जितने कंपोनेंट होंगे उसके साथ भी क्या बना लेता है, एक रिलेशन डेवलप कर लेता है, ओके। उसके साथ मीन्स उस कंपोनेंट, उस सेल के कंपोनेंट के न्यूट्रिएंट्स को भी फायदा पहुंचाता है एंड खुद भी उसका जो फीडिंग है या न्यूट्रिशन है वो अब्सॉर्ब करता है। सो इसके साथ भी क्या, अंदर सेल के अंदर जो एसोसिएशन बना रहा है उस टाइप के एसोसिएशन को या उस टाइप के फंगस एसोसिएशन को या माइकोराइजा को क्या बोला गया है, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। उनको अलग से नाम दिया गया है कि जो माइकोराइजा ऐसा कर पाते हैं उसमें कहा जाता है कि दे विल बी व्हाट, VAM इन शॉर्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये हेल्प करता है किसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड प्रोवाइड टू द रूट। सी, रूट को तो फायदा ही पहुंच रहा है, मिनरल को एब्जॉर्ब करा रहा है और रूट को पहुंचा रहा है। दीज हेल्प इन इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर जो रूट नहीं है तभी पे ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। These provide growth including hormones. In absence of fungus, finus and betula show growth despite of providing all type of nutrients. See, अगर ये जो फंगस नहीं है तभी कुछ प्लांट तो एज यूजुअली ग्रो करेंगे, लेकिन अगर फंगस है तो ग्रोथ और ज्यादा इंक्रीज करा देता है, ठीक। माइकोराइजा इनेबल द प्लांट टू ग्रो इन मिनरल डेफिशिएंट सॉइल, सलाइन सॉइल एंड अनफेवरेबल पीएच एंड टेम्परेचर। अब देखो, जिस एरिया में या जो प्लांट एरिया जो ट्री है, अगर उसमें माइकोराइजा है और उस जगह पे सॉइल खराब है या सॉइल इरोजन हुआ है या उस जगह का पीएच खराब है या टेम्परेचर ज्यादा है, स्टिल it will help the plant to grow perfectly or to grow as it was growing earlier, okay. In case of orchids, the fungus absorbs nourishment from outside and deliver to the germinating seed रहेगा यहाँ, okay. Here it will be what, seed as the same devoid of stored food. See, orchids में क्या होता है, जो इसमें फूड की कमी होती है, still fungus क्या करता है, फूड पहुंचाने का काम करता है germinating seed। Now a small point is there about kingdom plantae and animalia because ये दोनों पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, 2 चैप्टर ही रहेगा इन दोनों का। So a small point is there. Kingdom plant include what? They will include all the eukaryotic organism. They will have chlorophyll, and some of these members will be what? Partially heterotrophic. कुछ ही members होते हैं जिसको हम लोग insectivorous plants कहते हैं, और parasite. For example, Venus flytrap and bladderwort. Cuscuta is a parasite. वो छोटा plant है जो बड़े-बड़े plant and trees के ऊपर stay करता है. The cells are eukaryotic cell type with prominent chloroplast and cell plast. अगर इसको ना भी पढ़ाएं या ना भी डिस्कस करें right now, it is not that important because for this whole chapter is given for kingdom plant and kingdom animalia. Animal kingdom contains heterotrophic eukaryotic organism, multicellular हैं, इनके cells cell wall नहीं होता है। Main source of food क्या रहता है, plant रहते हैं directly या indirectly. Digestion के लिए elementary canal है, reserve food glycogen या fat रहता है। Mode of nutrition इनका क्या है, holozoic है, as what directly food material को ingest करते हैं, ingestion of food. Definite growth मिलता है, adults are definite shape and size होता है, higher forms and well defined sensory and neuromuscular mechanism रहता है, लोकोमोशन प्रेजेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जितना भी फीचर आज तुम अपने में देख सकती हो, ईच एंड एवरी फीचर इज फाउंड इन व्हाट, किंगडम एनिमेलिया। सो दीज टू वी विल डिस्कस इन सेपरेट चैप्टर्स। नाउ वी विल कम इनटू वायरसेस, वाटर वायरसेस।
So viruses have various characteristics, and they are the connecting link between what living and non-living. So we will quickly list the characteristics. Virus characteristics. First important point is what? They are connecting. Connecting link मतलब क्या होता है? Can you tell me what is the meaning of connecting link? Okay. Don't know the meaning of connecting link? It simply means to connect. To connect. To connect what? ये कनेक्टिंग लिंक किसके किसके बीच में? एक लिविंग को नॉन लिविंग से कनेक्ट कर रहा है, मींस इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक होंगे. इट बिहेव्स एज लिविंग आल्सो, इट बिहेव्स एज नॉन लिविंग आल्सो. ओके, नाउ they are not given place in any of RH Whittaker's 5 kingdom system of classification. Okay, they are not placed in any kingdom. उनको कोई जगह नहीं मिला. क्यों जगह नहीं मिला? क्योंकि जो RH Whittaker थे उन्होंने 5 क्राइटेरिया लिया था किंगडम्स को डिवाइड करने के लिए. न्यूट्रिशन लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल लिया था, उनका रिप्रोडक्शन मेथड लिया था. तो वायरस में तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया था. दैट इज व्हाई ही हैजंट पुट वायरसेस इन एनी ऑफ द किंगडम. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म. इनमें कोई सेल या कोई आउटर कवरिंग होती ही नहीं है. दीज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट इज व्हाट? दे आर वेरी इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट सेल, बट जब वो होस्ट सेल के अंदर आते हैं दे बिकम एक्टिव. सो दे आर इनएक्टिव एंड एज क्रिस्टलाइन फॉर्म. जब वो होस्ट की बॉडी में नहीं रहते हैं तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं. नेक्स्ट, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. Obligate parasites. Obligate parasite means what? Only will be found as parasite, और अगर parasite के फॉर्म में नहीं है तो वो लोग नहीं दिखेंगे. Okay? They are incapable of living independently. वो अकेले नहीं रह सकते हैं, खुद से उन लोग incapable है रहने के. Now they feed. Okay, they take nutrients from their host. Nutrients from their host. ओके, जितना भी न्यूट्रिएंट्स रहेगा जिस होस्ट पे है वो उन्हीं से लेंगे. दे मल्टीप्लाई इन देयर होस्ट ओनली. मल्टीप्लाई इन द सेल्स ऑफ होस्ट ओनली, एंड वहां रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं. ऑल्सो दीज वायरसेस आर ऑफ वेरियस शेप्स. ओके, दे आर ऑफ वेरियस शेप्स like spherical, like what? Spherical, cubical, helical, etc. we can say. And they are disease causing. Important point है, disease ही cause करते हैं, disease causing, and some are deadly also. Okay, कुछ क्या है deadly भी है और कुछ क्या है disease causing करते हैं, सिर्फ disease ही करेंगे. तो ये सारे क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है. बस ये है कि कनेक्टिंग लिंक है लिविंग बिटवीन नॉन लिविंग के. इनएक्टिव रहते हैं जब वो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जब होस्ट की बॉडी में आते हैं तो वो क्विकली एक्टिव हो जाते हैं और रैपिडली डिवाइड करते हैं, होस्ट की बॉडी में फीड करते हैं और उसी होस्ट को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं विद वेरियस काइंड ऑफ डिसीजेस. ओके, सो 5 kingdom classification was not classified viruses, viroids and other lichens in any group. The viruses did not find any place in any classification system because वो लोग truly living नहीं है as living organism, and those have cellular structure. तो viruses are what? Non-cellular organism है, वो लोग inert crystalline structure है outside the living cell. फिर an inert virus outside the cell virion कहलाता है. जो भी outside the cell है जिस वायरस का, उस वायरस को हम लोग क्या कहेंगे? virion. These are obligate parasites. They do not have biosynthetic machinery. मतलब कि अपना कोई भी मशीनरी नहीं है लाइफ प्रोसेस पूरा करने के लिए. जब भी वो होस्ट सेल में जाएंगे वो होस्ट सेल का ही मशीनरी यूज करेंगे. They infect the host cell and they will take over the machinery of the host cell to replicate themselves, and sometimes killing the host also. Okay, discoveries, this is not so much important. I'll just read it out. First, पहले इसको नाम किसने दिया था? पास्चर ने दिया था. And then DJ Ivanovsky पहले उसने डिस्कवर किया था that certain microbes are what? Positive agents of mosaic disease of tobacco. Now, M2 he demonstrated that extract of that infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant also. और यही इसको बोला गया इस फ्लूइड को वीवियम फ्लूइडियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. ठीक, W.M. स्टैनले ने शो किया था कि वायरसेस को भी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स. ओके, सो वायरसेस का जो पहला डिस्कवरी, पहला नाम दिया गया था वो पास्चर ने दिया था. एंड डीजे इवान्योव्स्की उन्होंने पहली बार मतलब देखा था कि कुछ माइक्रोब्स हैं जो डिसीज कॉज कर रहे हैं टोबैको में. फिर जो एंड्रू बेजरेनिक थे इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो डिसीज कॉज टोबैको थे वो अगर किसी और हेल्दी प्लांट के साथ रख दिया जाए तो वो भी डिसीज हो जाएगा. फिर W.M. स्टैनले ने इस वायरस को जब नाम दे दिया गया था तो उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइन करके मतलब क्रिस्टलाइज करके भी दिखाया था. ठीक, now size में they are ultra microscopic, means they are very small, smaller than bacteria also, and size ranges from 10 Newton meter to
150 to 40। अब यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे वायरसेस का साइज दिया गया है, उसमें से सिर्फ टोबैको मोज़ैक वायरस इज इम्पोर्टेंट। ओके, शेप में क्या है, स्फेरिकल है, क्यूबिकल, हेलिकल, पॉलीहेड्रल, बाइनल, these are various shapes. Okay, helical, you have to remember this one, tobacco mosaic virus. This is the structure of tobacco mosaic virus. Okay, tobacco mosaic virus is caused by what? Okay, this one is the structure of bacteriophage. Sorry, I was bacteriophage structure, bacteriophage, and this one is the structure of influenza virus, जो को कोल्ड फ्लू कॉज करता है, सर्दी। अब इसके स्ट्रक्चर में देखो, डायरेक्ट प्रोटीन का कोटिंग है, यहाँ पे एक इन्वेलप होगा, इट इज आउटर कवरिंग प्रेजेंटिंग सर्टेन वायरसेस, फिर कैप्सिड है, ये प्रोटीन कवरिंग के बाद जो ये लेयर है इसको बोलते हैं कैप्सिड। नाउ इसी कैप्सिड के अंदर क्या है, कैप्सोमियर्स मींस कैप्स वगैरह हैं, एंड न्यूक्लियोइड। देखो ये डीएनए क्या कर रहा है, सिंपली फ्लोट कर रहा है पूरे सेलुलोसिक मटेरियल के अंदर, जितना भी ये मटेरियल है उसी के अंदर सिंपली फ्लोट कर रहा है। तो न्यूक्लियोइड इसका इधर डीएनए है या आरएनए है, कोई दोनों कभी साथ में नहीं रह सकता है। और मोस्ट ऑफ द वायरसेस है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, एंड सम में इवन एग्जिस्ट सिंगली एंड मोस्टली डबल ही रहते हैं। एंजाइम में रेयरली कोई एंजाइम प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियोफेज में लाइसोजाइम तुम्हें मिल सकता है। ओके, जब उनके पास कोई अपनी मशीनरी रहेंगे तो रेयरली वो एंजाइम प्रेजेंट होगा, अदरवाइज एंजाइम विल नॉट बी प्रेजेंट। नेक्स्ट लास्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, इट इज नॉट वेरी दैट मच इंपॉर्टेंट। ओके, गिव मी 2 मिनट्स, पढ़ा ली फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या है, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ डीएनए या आरएनए, वायरसेस क्या है, 2 टाइप के हैं, एक तो डाईऑक्सीवीरा एंड राइबोवीरा। जिस वायरस में डीएनए पाया जाएगा उसको डाईऑक्सीवीरा बोल रहे हैं या डीएनए वायरस बोल रहे हैं, जिसमें आरएनए मिलेगा उसको आरएनए वायरस बोल रहे हैं। सिंपली ये याद रखना कि डीएनए वायरस होता है और आरएनए वायरस होते हैं। फिर इसके अंदर का इतना जितना भी जो भी पॉइंट है इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, एग्जांपल यू कैन रिमेंबर। टाइप ऑफ वायरसेस में प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस, बैक्टीरियल वायरसेस। अब जो भी वायरस जिस चीज को अफेक्ट करता है उसको नाम दिया गया है। लाइक प्लांट को अगर कोई वायरस अफेक्ट कर रहा है तो उसको प्लांट वायरस बोला गया है, एनिमल को जो वायरसेस अफेक्ट कर रहे हैं उसको एनिमल वायरसेस बोला गया है, एंड जो भी वायरसेस बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं उसको बैक्टीरियल वायरस बोला गया है। सो प्लांट का वायरस में यू हैव टू रिमेंबर दिस टोबैको मोज़ैक वायरस, एनिमल के वायरसेस में इन्फ्लुएंजा वायरस, स्मॉल पॉक्स, एंड you have to remember this HIV virus is there, no? Hepatitis virus. So HIV virus is not there. HIV virus is what? Also animal virus. So hepatitis, mumps, rhino, etc. These are what? Animal viruses. Now bacterial viruses is one which is caused by what? Bacteriophage. This one. See? बैक्टीरियोफेज क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था कि कैसे एक डीएनए का कैरियर बनता है, तो दिस बैक्टीरियोफेज वायरस इज ओनली was doing that. So it consists of what? Protein coat, then it has head, then it is forming neck, collar, sheath, tail, fiber, etc. This is the structure of this bacteriophage virus. Only few times it has been asked, otherwise this will not be asked. Okay. Shape of bacteriophage is what? Somewhat tadpole-like, which is consisting of head, icosahedral है, and tail. देखो एक head है, एक tail है. And head is what? Protein covering है head की, और capsid है. जो protein covering है इसको हम लोग बोल रहे हैं what? Capsid. Now internally the head encloses highly folded double stranded DNA, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जिसका लेंथ क्या है 50 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब इसी हेड के अंदर क्या है, डीएनए माया जाएगा, तो वही बताया गया। कनेक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड द टेल। अब इस हेड और टेल के बीच में क्या है, ये पूरी चीज को क्या बोल रहे हैं ये लोग, कनेक्टर। कनेक्टर इज प्रेजेंट एंड कनेक्टर कंटेन्स व्हाट? नेक एंड कॉलर। कॉलर consists several whiskers. The tail is narrow cylindrical part and it has what? Central hollow pore tube through where viral DNA injected. Okay, so ये पॉइंट जो है, ये डीएनए इसी पोर से जाके वायरल डीएनए इंजेक्ट होता है पर्टिकुलर होस्ट के सेल में। कहाँ? होस्ट के सेल में। Pore contains enzyme like lysozymes etc. Its sheath protein forms surrounded by 200 capsomeres. So ये जो ये एक छोटा लेयर दिख रहा है, ये कैप्सोमियर कहलाता है, एंड 200 कैप्सोमियर्स, 200 से लेकर के 2000 कैप्सोमियर भी इसके स्ट्रक्चर में मिल सकता है। फिर द टेल इंड इज बेसल प्लेट और इन प्लेट। इसको जो टेल का इंड है इसको बोल रहे हैं बेसल प्लेट, एंड द बेसल प्लेट इंक्लूड्स व्हाट? टेल पिन्स, टेल फाइबर्स दैट आर जनरली इन्वॉल्व अटैचमेंट टू द होस्ट सेल। इसी बेसल प्लेट से क्या हो रहा है, अटैचमेंट का शुरुआत होता है, मींस अटैचमेंट टू द एनी होस्ट सेल। देन सब वायरल पैथोजेंस ओनली विरोइड्स आर देयर, इट इज विरोइड्स एंड प्रायॉन्स। ये क्या है, वायरसेस से भी छोटे होते हैं, एंड ये भी क्या करते हैं, टियोडाइनर ने इन्हें डिस्कवर किया था। ओके, न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है, स्मॉलर है वायरसेस से, और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। यस्टरडे जो असाइनमेंट का क्वेश्चन था ना, तो ये विरोइड्स कॉज करते हैं। दिस वन इज द डिसीज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। ये क्या है, नॉर्मल पोटैटो है। पोटैटो क्या है, ये नॉर्मल है, लेकिन ये क्या कर दिया है, ये ट्यूबर के फॉर्म में कर दिया है, और ये क्या हो गया है, अब नॉर्मल है पोटैटो, अब नॉर्मल। ओके, सो ये एबनॉर्मलिटी किसकी वजह से हुई, यही विरोइड्स की वजह से हुई, जो पोटैटो क्या हो गया, ट्यूबर के शेप में हो गया। नाउ विरोइड्स आर स्मॉलर सर्कुलर आरएनए सिमिलर टू व्हाट, विरोइड्स, बट आर लोकेटेड इनसाइड प्रोटीन कोट ऑफ अ ट्रू वायरस। यहाँ पे सिमिलर टू वायरस रहेगा। ओके,
विरोसोइड्स ओनली, ये विरोइड्स के अंदर जितने कंपोनेंट उसको विरोसोइड्स बोल रहे हैं. दे रिक्वायर व्हाट? असिस्टेंस ऑफ वायरसेस फॉर रेप्लिकेशन. विरोइड्स आर फ्री आरएनएस डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन कोट. इनके अंदर प्रोटीन का कोटिंग भी नहीं होता है. एंड आरएनए हैज लो मॉलिक्यूलर वेट एंड टाइटली फोल्ड रहता है सर्कुलर या लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में. फिर प्रायोन्स क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ओनली एंड प्रायोन्स आर ओनली अफेक्टेड बाय प्रोटीएजेस. सी, जब एक विरोइड्स के बाद अब क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? प्रायोन्स. प्रायोन्स क्या होते हैं? हाईली रेजिस्टिव होते हैं. हाईली रेजिस्टिव. ओके, क्यों रेजिस्टिव होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर ना किसी एंजाइम का इफेक्ट पड़ता है, ना हाई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ना इनके ऊपर हीट का इफेक्ट पड़ता है. इनके ऊपर कोई चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता. दे कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय सर्टेन केमिकल प्रोसेस. सो ये प्रायोन्स क्या हुए? ये एक तरह से क्या हुए? अनडाइंग हो गया, या दे कैन नॉट डाई. न्यूक्लियेजेस टेम्परेचर देखो 800 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं तब भी ये नहीं मरेगा. यूवी रेडिएशन से भी कोई इफेक्ट नहीं होगा. फॉर्मल्डिहाइड वगैरह भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा. These cause disease by accumulating in nervous tissues and causes degeneration. Some common disease caused by them are what? Mad cow disease. So prions are causing, here I will write, prions are causing mad cow disease. Mad cow disease. And these viroids, they are causing what? Potato spindle tuber disease. Okay, so this chapter is completed now. If you are having any doubt in the whole chapter, you can we can have any extra class for this revision class we can have. So are you having any doubt in